Assalamu alaikum friends, I'm Abdullah and today we are talking about presenting the internet. Internet, a network of a global communication system that links together thousands of individuals. ये एक पूरी दुनिया में घूमता एक सिस्टम है जो कि हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड है. History of Internet. Seeds of Internet were planted in 1969 when the Advanced Research Project Agency (ARPA) of the US Department connecting computers at different universities. और ये नेटवर्क 1969 में बनाया गया जब ARPA यूएस डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर रही थी. रिजल्टिंग नेटवर्क्स ARPANET. इसका रिजल्टिंग नेटवर्क को ARPANET कहते हैं. If one part of network were destroyed, other parts would remain functional. अगर इसका एक कोई नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर जाए, टूट जाए, तो बाकी काम करते रहते हैं. ARP was a line network serving only a handful of users. ARP contains 4 hosts. It is a network server providing service to other components. इसके 4 होस्ट होते हैं जैसे कि सर्वर होते हैं और जो कि काम करते हैं सारे मिलके. Internet working. The process of connecting separate networks is called internet working. Internet major services. In the World Wide Web, electronic mail, news, file transfer protocol, chat, instant messaging, online services, peer-to-peer services. ये सारे इंटरनेट मेजर सर्विसेज हैं. Understanding the World Wide Web. The World Wide Web is also known as Web or WWW. It was created in 1989 at the European Political Laboratory in Geneva. इसको 1989 में जेनेवा फिजिक्स लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी में बनाया गया. Web working. Web documents can be linked together because they are created in a format known as hypertext. Web document can be linked together because फॉर्मेट में बनाई जाती है जिसका नाम है helper applications and multimedia content. As versatile as they are, web browser alone cannot display all types of content, especially multimedia content now available on the web. This tool is called. The next is searching the web. There are 10 of millions of unique websites which includes millions of unique pages. The two commonly used web page tools are directions, search engine direction. The directory enables you to search information by selecting categories of subjects. The directory enables you to research. ये हमें information by selecting ये हमें बताती है कि कैसे कोई सब्जेक्ट्स को इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है, कोई मतलब कि लेना है. द डायरेक्टरी सेपरेट्स सब्जेक्ट्स इनटू जनरल कैटेगरीज. ये सब्जेक्ट्स को जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है. आफ्टर सेलेक्टिंग कैटेगरी एंड सब कैटेगरी द डायरेक्टरी डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स. Search engines. By typing one or more words, search engines displays a list of websites which contains information
related to your words. हमें ये एक या दो वर्ड्स लिखने से ही पता चल लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नीचे खुल जाती हैं जिनकी वजह से मदद मिलती है रिलेटेड वेबसाइट्स। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जो इंग्लिश प्लेन को यूज़ करते हैं। The next one is email and other internet services. Email and other internet services. Using email, the only internet service that is more frequently used than the web is electronic mail or email. This system for exchanging messages through a computer network. ये ऐसी इंटरनेट सर्विस है जो कि तेज़ी से काम करने में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज सिस्टम फॉर एक्सचेंज मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क पे हमें एक दूसरे को फ्रेंड से मैसेजेस करने में भी हेल्पफुल होती है। अंडरस्टैंडिंग ईमेल, द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट send and service email is by using an email program and an internet connection. Using an email program. The following section briefly shows you how to create and send an email messages using Outlook Express running under Windows XP. Creating messages, receiving and reading a message. Using web-based email service, not expensive, easy to use, accessibility. Includes tens of thousands of news. हम इंटरनेट पे मैसेज ईमेल मैसेजेस के अलावा न्यूज़ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टीवी चैनल्स पे खबरें भी देख सकते हैं। ऑन इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज कॉल्ड न्यूज़, दीज आर न्यूज़, इन्हीं न्यूज़ के टन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं न्यूज़ देखने के लिए। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। एफटीपी इज इंटरनेट टू यूज टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईआरसी इंटरनेट रिले सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट इजीली थ्रू टेक्स्ट इन स्पेशल विंडोज। आईआरसी जो होता है ये यूजर्स को अलाउ करता है सही टाइम में टाइपिंग और स्पेशल विंडोज पे काम करने के बारे में सब कुछ बताते हैं। आईएम इंस्टेंट मैसेजिंग, आईएम इज लाइक अ चैट और प्राइवेट मेल फैसिलिटी टू कनेक्ट प्राइवेटली विद इन प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेजेस में मैसेज करते हैं प्राइवेट मैसेज को रखते हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग। Online services, a company that offers access and subscriptions basic to email discussion group on various subjects. बहुत सारी हमें सक्सेस करने के लिए जैसे इंटरनेट से हम चीज़ें खरीद भी सकते हैं कोई बेच भी सकते हैं ऐसे ईमेल डिस्कशन वहाँ पे एक दूसरों से डिस्कशन भी करते हैं बहुत कुछ वेरियस सब्जेक्ट्स हम भी कर सकते हैं। पीयर टू पीयर सर्विस, peer to peer services are distributed networks that do not require a central server to manage files. ये peer to peer services बोलते हैं जिसमें सारे होस्ट होते हैं सर्वर होते हैं कोई भी सर्वर नहीं होता सारे कंप्यूटर एक अपने इख्तियार खुद रखते हैं।
जो इंस्ट्रक्शन ये हार्डवेयर लेवल पे एग्जीक्यूट होती है और ये प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कंप्यूटर टू रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन से प्रोग्राम कहाँ रखना है और व्हाट इज़ अ कोड। The term code refers to the statements that are written in any programming language as in machine code or high level code. Term code refers to the statements, ये code होता है जो रेफर करता है statements that are written in programming language or machine code or high level languages. Machine code and programming languages. Machine code consists of is IS or and OS. It makes the perfect sense to the computer, not understandable by human being, the lowest low level language. ये जो होता है कंसिस्ट होता है IS एंड OS से। इट मेक्स द परफेक्ट सेंस टू ये कोई बहुत अच्छी सेंस के लिए होती है, कंप्यूटर के लिए होती है। ये इंसानों को समझ नहीं आती और ये बहुत लोएस्ट लो लेवल लैंग्वेज है। Programming languages. Although computer code must consist of OS and AES, but the programmers do not work this way. They uses the programming languages which are English oriented instead of binary. ये जो कंप्यूटर कोड होता है ये IS एंड OS होता है इनपुट और आउटपुट तो बट द प्रोग्राम पर प्रोग्रामर इस पे जो कि काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है जिसकी वजह से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि प्रोग्रामर्स के लिए इजी है लिखने के लिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आफ्टर क्रिएटिंग अ पीस ऑफ सोर्स कोड the programmer must convert the source code into machine code before execution. This job is done by the following प्रोग्राम लिखने के बाद उसको क्योंकि हमने वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा होता है जो कि कंप्यूटर को समझ नहीं आती जिसकी वजह से हमें वो प्रोग्राम कन्वर्ट करना होता है सोर्स कोड से मशीन कोड में। ये काम ये काम अंजाम देते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Planning a computer program. Programs can be difficult to write. Without a plan, the programmer will fail or will write a bad program. प्रोग्राम जो होता है वो बहुत मुश्किल से लिखा जाता है। ये अगर प्रोग्राम लिखने का प्लान हो ना हो तो बंदा सही तरह नहीं लिख सकता और फेल हो जाता है लिखने में और कोई गंदा प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेता है। If planned, the programmer will have an idea of what needs to be done and know where to start. अगर प्लान हो तो प्रोग्रामर को पता होता है कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ क्या क्या आइडिया और क्या क्या मुझे चाहिए वेट और मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। टू प्लानिंग टूल्स दैट प्रोग्रामर्स यूजेस आर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। ये 3 कॉलम्स होते हैं। इन फर्स्ट कॉलम में प्रोग्रामर लिस्टेड द व्हाट इज नीडेड टू सॉल्व द टास्क और पहले कॉलम में वो लिखा जाता है कि जो हमें चाहिए जो जो चीज़ें चाहिए उस प्रोग्राम को हल करने के लिए। इन सेकेंड कॉलम द प्रोग्रामर लिस्ट्स द स्टेप्स नीडेड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट और इससे दूसरे स्टेप कॉलम में हमें जो जो स्टेप्स दरकार होते हैं वो हमने लिखने होते हैं आउटपुट लाने के लिए। इन द लास्ट कॉलम द प्रोग्रामर लिस्ट द डिजायर्ड आउटपुट। जो लास्ट कॉलम में होता है प्रोग्रामर वो फिर डिजायर्ड आउटपुट लिखता है। How program solves problems. Program control flow. When you launch a program, the computer starts reading and carrying statements at the executable file's main entry point. After execution of first file, program control passes to the other statement and so on. Thus, the order in which program statements are executed is known as program control flow. जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेते हैं तो ये वो जो लॉन्च ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेते हैं तो कंप्यूटर उसको स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग करना एंड कैरिंग स्टेटमेंट एट द एग्जीक्यूटेबल फाइल और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में करने लग पड़ते हैं। मेन एंट्री पॉइंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट फाइल program control passes to the other statement and so on. Algorithms. The steps represented in an IPO usually leads to some desired usually results. Collectively, these steps are called algorithm. An algorithm is a series of step-by-step instructions that, when followed, produce a known or expected result. Algorithm is a step-by-step procedure in
that performed by the programmer to solve a program। और ये बहुत प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्लो चार्ट्स। डायग्रामेटिकली A diagrammatically representation of diagrams having a set of sequential operations which are performed for obtaining the required solution of a problem is called flowchart। डायग्राम के ज़रिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो वो स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए वो यूज़ होती है जी। ये हमें ये अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये बहुत को बनाने के लिए हम इसको बनाए और उससे बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह Pseudocode. The purposes of using pseudocode is an efficient key principle of an algorithm. It is used is planning an algorithm with sketching out the structure of the program before the actual coding takes place। ये जो pseudocode होता है ये efficient key principle of an algorithm होता है। It is used in planning an algorithm। ये एल्गोरिथम को प्लान करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी स्ट्रक्चर को स्केच करने के लिए प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को स्केच करने के लिए इस्तेमाल होता है बिफोर द एक्चुअल कोडिंग टेक्स प्लेस और एक्चुअल कोडिंग टेक्स उसके बनने से पहले। फॉर एग्जांपल ये एक हम पहाड़ी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ब्रेड्थ वगैरह सारे डायमीटर वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए सूडोकोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम की टाइप है हेरिस्टिक। Sometimes no algorithm exists to solve the problem. In this case, program rely on heuristic। Heuristics are a set of steps for finding solution to a problem। Heuristics does not come with guarantee of best solution for problem। It offers the good chance for finding the best solution। हेरिस्टिक वो होता है जब हमें प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम मतलब ना हो तो अब हम हेरिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। इन दिस केस प्रोग्राम हेरिस्टिक ये तब प्रोग्राम सारा का सारा हेरिस्टिक पे रिलाई करता है। हेरिस्टिक्स आर अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हेरिस्टिक होता है जो कि स्टेप्स के ज़रिए प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है प्रोग्राम के अंदर। फाइंडिंग और प्रॉब्लम सोल्यूशन उनका फाइंड आउट करता है। हेरिस्टिक डज नॉट कम विद गारंटी ऑफ बेस्ट सोल्यूशन। हेरिस्टिक की गारंटी नहीं होती कि वो सही आंसर जवाब दे फॉर प्रॉब्लम। इट ऑफर्स द गुड चांस फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। पर ये ये होता है कि ऑफर करते हैं चांस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। चांस होता है कि अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, पक्का नहीं होता कि इसका फुल ऑफ आंसर ठीक आए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व इन 1970। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तो ये इन्वॉल्व इन 1970 में आई है। ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आसानी से रीड और अंडरस्टैंड हो जाती है। ईच मॉड्यूल परफॉर्म सिंगल टास्क, हर मॉड्यूल अलग सिंगल टास्क परफॉर्म करता है। प्रैक्टिसेस कैन बी यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रैक्टिसेस जो हर किसी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है किसी भी। वन गोल ऑफ इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ईजी टू रीड कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1980। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1980 में बनी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ OOP आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इसे OOP भी कहते हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स OOP आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग process। Evolution of programming languages. Machine languages, the process, the computer's own binary based languages are machine language. It's difficult to use but because it consists of zeros and ones। The computer जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में रिलाई करता है जो कि ज़ीरो एंड वन होती है, जिसकी जो कि इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो ये बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से इस्तेमाल होती है और ये
जीरोस और एंड वंस के फॉर्म में होती है। High level languages. The high level languages are English oriented language uses English words such as open list print which might stands for an array or instructions. High level language होती है, English oriented language होती है। ये English वाले words होते हैं like for example open list print which might stands for an array or instruction। जो ये array और instructions होती हैं historical landmarks। In 1950, the assembly programming languages was developed which included the use of macro instructions. 1950 में इस assembly language programming language develop हुई which include the use of जिसमें macro instructions भी डाला गया। In 1950, the assembly programming language was developed which included IBM developed the language in 1957 which was known as formula translation. It was the first high-level programming language which was widely used. IBM ने 1957 में एक लैंग्वेज फॉर्ट्रेंस बनाई जिसे फार्मूला ट्रांसलेशन स्टैंड्स फॉर होता है। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत यूज़ हुई, बहुत इस्तेमाल में आई। In 1958 the algorithm language was developed and it was scientifically oriented. 1958 में एल्गोरिथम लैंग्वेज डेवलप हुई और ये साइंटिफिकली ओरिएंटेड थी। C basic beginners all purpose symbolic instructions code was developed in the early 1960 for use by non-professional computer users। C basic है ये डेवलप 1960 से पहले बनी गई जो कि कंप्यूटर्स के प्रोफेशनल्स नहीं हैं उनके लिए बनाई गई। Logo was developed to introduce children to computer. Logo was developed to introduce children to computer. It was logo 1970 में बनाया गया।